So T is equals to 2 pi under root L cos theta upon G. Okay, and what does T over here represents velocity? Yes, sir. What does T represents over here? Velocity of a motorcyclist? Yes, sir. Okay, fine. And what does L represents over here? Velocity? No. Sorry, sir. T represents the time, and Time. L represents प्रिशा, मैंने तुम्हें क्या क्वेश्चन पूछा? नहीं, मैंने क्या पूछा क्वेश्चन? गुड मॉर्निंग प्रिशा, ढूंढने में टाइम लगा ना? और नहीं पेज सर। खोला भी, पेज खोला भी तो कौन सा खोला? गलत वाला खोल दिया है ना? ये आप पे कोनिकल पेंडुलम के बारे में बोल रहे हो क्या? ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला है t is equal to 2 pi under root L cos theta by g, where L is the oscillating length, theta is the angle with the vertical, है ना? उसके उसके सर पहले तो मैंने मैंने सिंपलेट कोनिकल किया। पेंडुलम और मोटरसाइकिल के लिए दोनों के लिए सेम लिखा है। हाँ, मैंने मोटरसाइकिल को ऑलरेडी, लेकिन वो वेलोसिटी के बारे में माइट है। मैंने अच्छा अच्छा। वेलोसिटी पूछा था। v is equal to अंडर रूट आर जी tan थीटा, एक फॉर्मूला दिया है ना? हाँ हाँ सर है। हाँ, यानी रिवाइज करो। देखा, यस सर। बिना रिवाइज किए, it's not you my dear, it's everybody is like that. सच्ची बोलो ना, she has given the answer. It's fine, Prisha. Okay, but Prisha, I want to tell you, like you, if you see over here, there are 30 students in this class. Students, I'm telling you very clearly, hardly 3 to 4 students are revising the previous matter. दिस इज समथिंग रियली बैड स्टूडेंट्स। तुम लोग फिर ऑनलाइन को ब्लेम करते हो। नहीं, ये तुम्हारी गलती है। तुम विदाउट रिविजन, विदाउट गोइंग थ्रू द मैथमेटिकल फॉर्मूला, विदाउट गोइंग थ्रू द डेरिवेशन, तुम जब भी लेक्चर में बैठोगे तो कहाँ से ऑब्जर्व होगा? मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, तुम्हारा पीछे का बैकलॉग का वैसे ही है। व्हाई डू यू डू लाइक दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, ये मेरे फॉर्मूलाज नहीं पूछा होता तो क्या होता? सम स्टूडेंट्स हु हैव लर्नड इट, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उनको आता है तो दे हैव आंसर्ड, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि चलो वी नो इट। और जिसने आंसर नहीं दिया, जो जो कंफ्यूजन में आ गए, उनको फील हुआ कि यार मेरे को ही पूछा, बाकी किसी को तो नहीं पूछा, व्हाई इज ही टारगेटिंग मी? But no, if I'm asking somebody and if that person is not answering, it goes and applies to the rest of the students also who haven't learned. It's for everybody, not for one particular person. Don't do studies in this manner. And at least physics के लिए तो ऐसा मत करो. You'll be into a mess, students, whether you are going for JEE or NEET, whatever studies. अगर तुम daily physics नहीं करोगे, it will be a great problem, students. She had given the answer correct. Students, you all had major test on the Sunday or what as such? था तुम्हारा major test, है ना? गौरी, major test था? लास्ट संडे था सर। अच्छा, लास्ट टू लास्ट संडे था। एंड टॉपिक क्या था रक्षित? सर टॉपिक्स थे एनएलएम था, एंड देन काइनेमैटिक्स भी था, एंड वेक्टर देन कैलकुलस था। ओके, और अभी आगे है टेस्ट, नाउ शेड्यूल है वापस, कुछ डेट्स है? नो सर। ओके, तो हाउ वाज द स्कोरिंग फॉर द प्रीवियस मेजर टेस्ट? स्कोरिंग कैसा था फिजिक्स में? सर मेरा ठीक था, लाइक ओके। ओके, लेकिन please, those students I'm speaking about, those who reply, those who revert, those who answer, those who are, please monitor your answers. एक ऑब्जर्वेशन में रखो स्टूडेंट्स, तुम्हारी जो प्रीवियस मेजर टेस्ट हुई है वहां पे कहाँ पे तुम गलत गए हो, प्लीज उसको मार्क करो कि क्या मेरा ऑब्जर्वेटरी एरर है, मेरा कैलकुलेटिव एरर है, मेरा मेरा कैलकुलेशंस में मैंने बराबर नहीं किया है, या मेरा फंडामेंटल्स कंसेप्ट ही सही नहीं है, या आई एम नॉट एबल टू थिंक एट ऑल इनटू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. It's all these things you need to look into it.
or did I mismatch with the options? Mismatch with the options यानी मैंने जब भी solve किया तो मेरा ABC आया, 10th 11th 12th is ABC, वहाँ पे 9th 10th 11th को ABC डाल दिया तुमने, वो वाला errors भी होता है. So all these things has to be monitored, students, and you need to work onto that. And always students work onto your weaknesses. Strength को और stronger बनाओ, weaknesses के ऊपर work करो, and that is very important. And my dear students, vectors and calculus, do not lose it. Have a grip रखो. जेई स्टूडेंट्स के लिए तो फिर भी कैलकुलस आगे जाके फिर भी कंसिस्टेंसी में रहेगा क्योंकि वो मैथ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन नीट स्टूडेंट्स जिसने मैथ्स नहीं लिया उनके लिए कैलकुलस बहुत हैवी हो जाएगा बाद में. इफ यू डोंट डू कैलकुलस ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, वापस फॉर्मूलाज अगर नहीं रिवाइज करोगे, वापस कैलकुलस के जो प्रॉब्लम्स किए हैं उसी को वापस तुम सॉल्व नहीं करोगे, you'll be losing touch with calculus part of it, the maths part of it, and that will create a problem for not able to solve problems further ahead in physics as you go further ahead with the syllabus of physics. The students, make your studies more easier. Okay, students, now let's move further ahead. In the last lecture, I told you about conical pendulum. I told you about motorcyclist also, students. I told you about rotating drum, a man in a rotating drum also. The minimum angular speed का formula हम लोग ने derive किया. So तुम अगर throughout देखो students, तो सब में देखो velocity आ रहा है students. And you need to keep in mind. You need to keep in mind about the mathematical relations for all. देखो सबसे पहले हम लोग ने जब भी किया था तो velocity of a car on a circular unbanked road. Unbanked road, mu RG, friction was a cause. Since friction की वजह से, ध्यान से सुनना, everybody listen carefully. पहले केस में banking नहीं था, second केस में banking था. तो पहले केस में banking नहीं था तो what's the maximum velocity of a car? Mu RG, under root mu RG. Agreed? Banking करने से हुआ क्या? Mu का factor चला गया and horizontal component of the normal reaction force आ गया था. I repeat, वापस बोल रहा हूँ मैं. Horizontal component of the normal reaction force was a cause for the car to move on a circular banked road. V is equal to under root RG tan theta, theta with the horizontal. तो वहाँ पे n को रिजॉल्व करके हम लोग ने किया था. I get it? तो पहले फ्रिक्शन वो कार को होल्ड कर रहा था, अभी कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज होल्डिंग इट. लेकिन यहाँ पे भी अगर स्पीड बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन होल्ड करेगा. तभी just now I asked Gauri the formula for V minimum and V maximum. These were the two relations. And इस सारे में velocities आ रहा है students. फिर velocity of a motorcyclist, velocity of a pendulum. These all things I said it very clearly. Now students, if I happen to ask you students for vertical, now we go for vertical circular motion. This is almost on the verge of finishing with the topic students, vertical circular motion apart from gravitation. Now, if I speak about students, the next part is your vertical circular motion students. A body set to move in a vertical plane. Vertical plane. अभी जो हम लोग ने किया था horizontal plane. Since horizontal plane में effect of gravity was constant. Listen carefully students. Effect of gravity was constant. अगर तुमने ध्यान दिया होगा last lectures में, जब भी मैं conical pendulum के बारे में बात कर रहा था students, सोचो कि ये bob of the pendulum है, ये string है. Conical pendulum में मैंने what did I do students? I took the bob displaced at an angle theta and then I revolved where in a horizontal plane. I revolved in a horizontal plane. And students, if I wanted to get the formula for velocity या time period, मुझे बताओ students, मैंने pendulum के अंदर tension को resolve किया था या weight को resolve किया था? The bob was moving in a horizontal plane. तो मैंने किसको resolve किया था? Tension को resolve किया था या weight? हाँ students? Yes, Gauri, I didn't hear you. Can you be clear? Sir, tension. Absolutely correct. Students, ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए. And why is it so that only few students are giving answers? Students? Why only few students? At times Rakshit is there, at times Gauri is there, at times Shreya is there. Very few students are there who's answering in that case. The rest of them are just zipped. क्यों ऐसा करते हो?
Students, आंसर देने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आंसर्स कौन देता है मालूम है? जो पढ़ के बैठा है वो देते हैं। जो नहीं पढ़ के बैठते हैं वो नहीं दे सकते। और यही मैं बोलना चाहूंगा, अगर इन फ्यूचर में आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड रिमेंबरिंग द नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, whenever you will be having a parents meeting, just see what exactly I'm going to speak out to your parents. Along with you, along with the parents, when you're coming, I'll speak each and everything about you, what exactly you do inside your classroom. They should know what is happening, exact information. You can't give incorrect information to your parents regarding your studies. Each and every candidate का मुझे पता है कि what exactly is saying it. क्या कर रहा है ज्योति saying, ज्योति. Nothing, not even a single reply or response. And there are few section of students, last 20 minutes, 15 minutes, there are students 30 minutes, they move out from the lecture, least bothered. And the reason is network issue. So students, what Gauri gave, it's a correct answer, she said it. Students, अगर कोई भी body को मैं horizontal plane में move करता हूँ, students, तो यहाँ पे string के साथ में connect था, तो हमने tension को resolve किया. But now we are speaking about students vertical circular motion. Students, vertical circular motion. I will consider as a non-uniform motion. Now, vertical circular motion, I'm trying to go for a non-uniform motion, students, where what is happening in that case? The velocity of the body goes on changing, students. The velocity of the body goes on changing. So your mic has been muted. No, I'm not saying anything. I didn't say anything. I was just drawing the diagram, students. Now, this is a vertical circular motion, students. And vertical circular motion is a best example of a non-uniform motion, students. So यहाँ पे think as if I've taken a particle, students, and I'm making the particle to revolve in a vertical plane. Revolve in a vertical plane. And students, these are the different positions of the particle. Let us say the particle is at the lowest position. This L stands for lowest position, students. Your D stands for your diametrically opposite positions. Your H stands for the highest or the topmost position, students. Agreed? And R is the radius of the circular path. R is the radius of the circular path. What kind of motion the body is performing? And the answer would be the body is performing circular motion, students. But is it uniform or non-uniform? It's non-uniform. That means, students, the velocity of the particle at every instant goes on changing. अगर मैं velocity lowest position पे लूँ students, तो lowest position पे उसकी velocity क्या होगी? दिल्ली से the lowest position पे उसकी velocity सबसे maximum होगी. क्योंकि lowest position पे अगर जब तक body को lowest position पे maximum speed नहीं मिलेगा, the body will not manage to complete one full cycle, students. I repeat, if the body doesn't get sufficient speed at the lowest position, the body will not complete one full vertical motion we consider. I want the body should complete one cycle, one complete cycle. That means it need to have sufficient speed at the bottom, and that should be maximum. As the body reaches upwards, now see over here, if I take this as my lowest position, I can consider this as my ground level.
ये मेरे ग्राउंड लेवल होगा। जब ये बॉडी along the diameter पहुंचता है तो what happens? Does the body has raised or gained some height? Yes, the body has raised some or gained some position equal to the radius. So in this case, what happens to the potential energy of the body? Potential energy of the body will increase, but certainly kinetic energy will decrease. This decrease in kinetic energy will certainly have decrease in velocity, we consider. So as the body goes upwards due to the gravitational pull of the earth, the velocity decreases. Velocity decreases तो kinetic energy decrease होगा. Kinetic energy decrease होगा, potential energy increase होता है. फिर भी total mechanical energy हमेशा constant रहेगा. That means a student who is listening to me will say, sir, you mean to say that is the total mechanical energy of the body at the lowest position will be equal to the total mechanical energy at the diametrically opposite position is also equal to the total mechanical energy at the highest position? Yes, absolutely correct. The total mechanical energy all the time remains constant. Since sir, exactly identically we have done such kind of derivation, students. You have done it in kinematics also. Vertical motion. A body is made to fall vertically from the ground. You must have done in work power energy also. Energy के अंदर energy part में किया है law of conservation of energy. Since law of conservation of energy holds true for linear motion also, for circular motion also, as well as oscillatory के लिए भी होता है. तो अगर मैं लीनियर मोशन में करता हूं तो बॉडी इज मेड टू फॉल फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. स्टूडेंट्स, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑल द टाइम रिमेन्स कांस्टेंट. हाईएस्ट पोजीशन, अ पोजीशन एनीवेयर, इंटरमीडिएट एंड लोवेस्ट पोजीशन. स्टूडेंट्स, कुछ याद है? द टोटल मैकेनिकल एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू mgh and remains constant. स्टूडेंट्स, Yes, sir. एग्जैक्टली आइडेंटिकली यहाँ पे भी कांस्टेंट है. लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म है और ये वर्टिकल साइकिल में है. First, we are trying to find out what, we are trying to find out velocity of the body at any instantaneous position, students. Are you getting it? Now we go for velocity, but before going for velocity, students, we'll find out velocity at every position and then at a particular position. Students, फिर मैं एक position यहाँ पे लेता हूँ, students. Let us say that I've taken a stone. Students, I've taken a stone and the stone is tied to the bottom of the string and the string is made to move vertical. Okay, हमने उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ले लिया है. अभी स्टोन का इंस्टेंटेनियस पोजीशन यहाँ पे एट पॉइंट पी. हम यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स इसकी वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट पॉइंट पी. हम ये भी फाइंड आउट करेंगे at any instantaneous position. First, let us find out position of the velocities are different. So let us go for that. Now, सबसे पहले मैं हाईएस्ट पोजीशन पे लेता हूँ स्टूडेंट्स. ध्यान से सुनना. अभी ये जो मैंने एग्जांपल दिया था वो किसके लिए सब दिया था स्टूडेंट्स? प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स. ये जो एग्जांपल मैंने दिया है स्टूडेंट्स, आपने बोला कि एक स्ट्रिंग है, ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, वर्टिकल सर्कल, और आपने बोला स्टोन यहाँ पे है और ये स्टोन सर्कुलर मोशन कर रहा है और आपने ये हाईएस्ट पोजीशन ले लिया है, टॉप मोस्ट पोजीशन. हम टॉप मोस्ट पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स. हाईएस्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? अभी देखो स्टोन इस तरफ आ रहा है. Are you getting it? I want to find out the velocity of the stone at the highest position. The path of the stone is circular. Agreed? How to get the formula for this? Since मैंने सिर्फ ऊपर वाला सेक्शन का डायग्राम किया, अगर मैं पूरा डायग्राम करूंगा तो ये मेरा वर्टिकल सर्कल होगा और ये रेडियस हो गया. Friends, is this diagram clear to all of you all? Yes, sir. Now listen carefully. जब भी ये स्टोन टॉप मोस्ट पोजीशन पे होगा स्टूडेंट्स, is it tied with a string? Yes, it is tied with a string. Now, when it is tied with a string and the stone is in the topmost position, students, can you tell me what are the forces acting? That means, can you consider the free body diagram for a string tied with a stone and the stone is in the vertical position at the highest point? Can you draw a free body diagram for it, FBD for it?
That means I need Yes. to locate forces. तो क्या बताओ, कोई बता सकता है what are the forces acting at the highest position? Tension. Absolutely correct. Direction of tension कहाँ से कहाँ होगा? Outwards. Tension बाहर की तरफ जाएगा और tension is directed inwards. Inward. It's always towards the point of suspension, students. Tension is always directed where? Towards the point of suspension. Students, जब तुमने ऐसा सीधा रखा, हेलो, तुमने जब सीधा रखा, अगर बॉब सीधा है तो टेंशन ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो वैसे वही स्टोन जब ऊपर की तरफ आएगा तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन? Downward. एग्रीड. Yes. और कौन सा फोर्स होगा? व्हिच आर द फोर्स? Weight of the body. वेरी गुड स्टूडेंट्स, द वेट ऑफ द स्टोन आल्सो एक्टिंग डाउनवर्ड्स. और कुछ है? एनी ऑफ द फोर्स? Normal. Centripetal. सेंट्रीपिटल भी नीचे की तरफ ही होगा, है ना? Yes, sir. तो गौरी मुझे ये बता, जब ये तीन फोर्सेस नीचे की तरफ है, टेंशन भी नीचे आ रहा है, एमजी भी आ रहा है, तो फोर्स सेंट्रीपिटल है तो बॉडी तो नीचे गिरना चाहिए. So गौरी हाँ बोलो. there is centrifugal force also acting in the opposite direction. हाँ, that means the centripetal force is actually the centrifugal which you have to consider. Equal in magnitude, opposite in direction. Agreed? Yes, sir. हम वो वाला फोर्स पकड़ते स्टूडेंट्स. यानी बाहर की तरफ कौन सा फोर्स होगा? बाहर की तरफ फोर्स सेंट्रीफ्यूगल होगा, इक्वल इन मैग्नेट ऑपोजिट डायरेक्शन. लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स एंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर फोर्स सेंट्रीफ्यूगल? स्टूडेंट्स, फोर्स सेंट्रीफ्यूगल इज अ रेडियली आउटवर्ड फोर्स from the center passing to the center of gravity radially outwards. What are the formulas of force centrifugal? So there are again three formulas: mv square by r, mr omega square, m into v into omega. Students, hope ये तीन formulas तुम्हें याद हो. सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के हमें वेलोसिटी चाहिए तो मैं mv स्क्वायर बाय r यूज करूंगा. लेकिन अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, अभी भी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है क्योंकि एक फोर्स बाहर है और दो फोर्स अंदर की तरफ है. Sir, normal. Normal, how can normal be there, my dear? Normal reaction is body when suspended or body in contact with the surface. Yeah, sir. Correct. यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो यहाँ पे आएगा नहीं. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का मतलब जब भी बॉडी कांटेक्ट में एट प्रेजेंट सपोज स्टूडेंट्स, तुम राइट नाउ यू आर टेकिंग लेक्चर्स, तुम अपने सीट पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, कोई काउच पे बैठा होगा, कोई अभी भी बेड के ऊपर लेटे हुए लेक्चर्स देखता होगा, सोते सोते कंबल में, हाथ में फोन रखा होगा, किसी ने फोन साइड पे रखते हुए ऐसे देखते देखते सोने की ट्राई कर रहा है. देयर आर लॉट्स ऑफ वेज एंड वीच इन विच लेक्चर्स कैन बी अटेंडेड. अटेंड कर रहे हैं ना, बस आ गए ना, घुस गए ना लेक्चर्स में, पेरेंट्स को भी परवाह नहीं है, तुम्हें भी परवाह नहीं है. दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग. एंड if I try to find out many of them, I can catch it right now also, because many of them are fooling around with their parents in studies. They're not at all sincere with their studies. Since यहाँ पे जब भी तुम देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और अगर तुम चेयर पे बैठे हुए हो राइट नाउ तो स्टूडेंट्स एक फोर्स mg नीचे जा रहा है, नॉर्मल ऊपर जा रहा है, यानी इन कॉन्टैक्ट. स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो फोर्सेस नीचे, ऊपर एक फोर्सेस है, तो देयर शुड बी द बॉडी इज गोइंग टू फॉल. स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है? ध्यान से सुनना. यहाँ पे स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स, द पार्टिकल और द स्टोन स्टिल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन के लिए मेरा बाहर का फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए. स्टूडेंट्स, my force we consider of centrifugal should be balancing with t plus mg. ये तुम्हारा है स्टूडेंट्स, है ना? ये एक्चुअली बैलेंसिंग पोजीशन है. yes Shreya, can you throw some light onto it? Shreya, बताओ. So I guess the tension would be zero because as it is going upwards, the tension force is reducing. Why what is the reason? Because actually tension is just an elongation of the But your voice is not clear. Can you take the mic closer to your mouth? So is it now? Still not. Hello, sir. Yeah, now it's fine.
So, tension refers to the elongation of the thread. So, as it is going upwards, the elongation keeps on reducing. So, I guess at the topmost point, it would turn out to be 0. There's only one force is required. So, we are taking the centrifugal here. So, tension does not. Absolutely correct. Students, at the topmost position ये equality में आ रहा है, लेकिन अगर ये बॉडी को सस्टेन करना है अपना मोशन, तो मुझे फोर्स सेंट्रीफ्यूगल should be greater. Greater कभी होगा? When tension becomes 0. अगर T को मैं 0 ले लूं students, tension at the topmost position becomes 0. Then force centrifugal will be greater than weight mg. Since tension is equal to 0. तो देखो ना, ये फोर्स ज्यादा चाहिए मुझे, तभी जाके बॉडी विल होल्ड इटसेल्फ ना. ये बाहर का फोर्स होगा तभी जाके तो बॉडी एक साइकिल कंप्लीट करेगा, नहीं तो नहीं होगा पॉसिबल. यानी ये फोर्स को ग्रेटर करने के लिए मेरा टेंशन एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू 0. तो अगर मैं टेंशन को 0 लूं तो ये फोर्स ग्रेटर देन mg हो जाएगा. तो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स सेंट्रीफ्यूगल? माय फोर्स सेंट्रीफ्यूगल इज व्हाट? mv²/r greater than mg. mm will get cancelled. Friends, did you get the velocity at the topmost position or the highest point? Under root rg. And this is the velocity at the topmost position or velocity at the highest position. Students, what exactly? This is the best velocity which the stone should have. Students, ये safest velocity है. And it should be always greater than under root rg. R is the radius of the circular part and g is gravitational acceleration. But students, जब भी हम physics पढ़ते हैं तो क्या हम equations greater than में लिखते हैं? जब हम यूज करते हैं we go for greater than or equal to. तभी जाके the velocity at the topmost position is equal to under root rg. क्या ये क्लियर हुआ? Is this clear to all of you? Yes, sir. All of you all, not 1 or 2%, not only Sir? Rakshit, what about the rest of them? Shreya, is This it will clear or is it clear? Yes, bolo. Yes, sir. this will be the minimum velocity for the body. Yes, that's a minimum velocity it needs. ये minimum velocity है. ये maximum greater than होगा तो maximum होगा. Yes, sir. ये minimum होगा. अब एक सिंपल ये तो फिर भी तुम्हें देखो अभी और एक एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट्स. हैव अ लुक. वर्टिकल का ही है. हैव अ लुक. स्टूडेंट्स, हैव यू सीन अबाउट डेथ ऑफ स्फीयर? हैव यू हर्ड अबाउट डेथ ऑफ स्फीयर और हैव यू सीन एनीवेयर अ वीडियो ऑफ डेथ ऑफ स्फीयर? डेथ ऑफ स्फीयर, नॉट डेथ ऑफ वेल. डेथ ऑफ वेल तो एक शायद सलमान की एक मूवी आई थी स्टूडेंट्स. आई डोंट नो अबाउट इट वेदर यू रिमेंबर. आई डिडंट सी इट बट आई हैड सीन दैट वन सीक्वेंस. एक सीक्वेंस था, एक सलमान की मूवी आई थी, वो बाइक राइडर था उसमें और वो एक वेल दिखाते हैं and he enters inside and he used to do that shows. It's like that. And that is death of well. And the bike is like to move in a circular path. और जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी तो बाहर की तरफ जाता है. Students, have you heard about any kind of movie like that? No, sir, but I have seen on the TV. Like Okay. And what is death of sphere? Are you aware about death of sphere? it's a large metallic sphere in which they ride bikes. Like Absolutely correct. एक बहुत बड़ा metallic sphere. Students, normally circuses में होते हैं या जहाँ पे तुम if you go fairs. somewhere in theaters or whatever it is, they try to show it over there. These are different shows where people are there. तो यहाँ पे क्या है, एक बड़ा सा metallic sphere होता है students, and it's not a small, it's a big sphere students. अगर I've seen it once abroad students, China में देखा था मैंने, I don't know where exactly. It was a big sphere, लेकिन you won't believe उसमें number of bike riders were 12. 12 बाइक राइडर्स को अंदर डाल दिया था उन्होंने. और एक ऐसा घूम रहा है, कोई ऑब्लिक घूम रहा है, कोई हॉरिजॉन्टल, एक के पीछे एक हॉरिजॉन्टल घूम रहा है, कोई दूसरा ऑब्लिक घूम रहा है, and no collisions. And changing their directions also, they're changing their path also. One bike rider used to put a horn
that was a signal, and that's a light. The front light and the back light used to. So that was a signal for the rest of them to change their path. It was beautiful and no head-on collisions. यानी ये है क्या स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैं अगर बाइक राइडर का एग्जांपल दे दूं स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल यहाँ पे आई कैन गिव इट टू ऑल स्टूडेंट्स. अभी देखो ये एग्जांपल अगर मैं लूं बाइक राइडर का, थिंक एज इफ इट्स अ वर्टिकल सर्कल स्टूडेंट्स. यहाँ पे बाइक राइडर है. नाउ बाइक राइडर इनिशियली इट्स मूविंग और ये लोएस्ट पोजीशन पे स्टूडेंट्स. एग्रीड. यही बाइक राइडर जब भी टॉप मोस्ट पोजीशन में होगा तो टायर्स ऐसे होंगे स्टूडेंट्स, है ना. ये इसका हैंडल होगा और बाइक राइडर अभी उल्टा हो गया. मुझे बताओ चाहिए ये सेंटर है और बाइक राइडर उल्टा होगा, ये तो गिरना चाहिए ना ऊपर जाने के बाद में. स्टूडेंट्स वो कभी गिरेगा मालूम है, अगर बाय चांस ड्यू टू टेक्निकल फेलियर अगर इसका इंजन ही बंद हो गया, बाइक का गाड़ी ही बंद हो गई, तो भाई बेचारा तो गिर जाएगा, सर के बल गिरेगा, सर फट जाएगा, मर जाएगा वो. दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज डेथ ऑफ स्फीयर. दूसरी बात, अगर if this bike rider doesn't get that sufficient speed, students, the bike rider will not be able to complete that cycle. He will have a parabolic path, वो वापस नीचे गिर जाएगा. यानी यहाँ पे तुम्हें एक sufficient speed देने की जरूरत है और वो हमेशा greater होना चाहिए. That's the maximum, but we can go for minimum under which can hold. This is the speed with which the body can hold or remain in contact with the sphere. This is the speed at which the string will not get slackened still, in spite of tension becoming zero. The body will, the tension is zero. लेकिन फिर भी तुम्हारा स्टोन पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर देगा उस मोमेंट के ऊपर. यहाँ पे टॉप पोस्ट पोजीशन में देखो, यहाँ पे जब भी साइकिल आएगा तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा, वो जैसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, दो फोर्स तो आ गए, तो ये गिरना चाहिए नहीं, लेकिन सामने की तरफ कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल होना जरूरी है. अगर मैं ये बैलेंसिंग फोर्सेस ले लूं तो एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल प्लस mg. लेकिन अगर मुझे कांटेक्ट में रखना है तो बाहर का फोर्स मुझे हमेशा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू mg. तो मैं यहाँ पे किसको ले लूंगा, जीरो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो जीरो. अगर मैंने n को जीरो डाल दिया तो ये बट ऑफ कोर्स इससे ग्रेटर हो गया. देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg से ग्रेटर हुआ. अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेटर हुआ mg से, then the bike rider will hold himself to the surface. तो अगर मैं ये इक्वेशन लेता हूं तो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन यहाँ पे भी आ रहा है. तो यहाँ से हमें क्या मिला, so the maximum velocity for it should be what, greater than under root rg. The minimum speed which I needed will be equal to under root rg. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. देखो सीधा डिफरेंस, यहाँ पे स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और यहाँ पे कैसा किया है, the motorbike is resting onto the surface, we consider. In either case, my answer is V is equal to under root rg. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Now take a simple example स्टूडेंट्स. ये शायद तुम लेक्चर्स के बाद में एक्सपेरिमेंट करना भी करना है, ये करना भी स्टूडेंट्स. अगर तुम्हारे घर के अंदर इतना सा बकेट हो, एक छोटा सा बकेट हो हैंडल वाला, ओके, पानी उसके अंदर पूरा पानी भर दो, पूरा ब्रिम से भर दो. Take that bucket into your drawing room, जो ये तुम्हारा हॉल वगैरह में लेके जाओ, and see to that you don't face it towards the TV or like that, okay? और फैन से दूर रखना. लेकिन मेरे नाम पे बिल मत फाड़ना अगर कुछ हुआ तो, प्लीज. बोलना नहीं कि सर ने बोला था करने के लिए, नहीं तो सारे पेरेंट्स मेरे पे चढ़ बैठेंगे. लेकिन स्टूडेंट्स ये करना कि ये बकेट है, बकेट के अंदर तुमने पानी भरा हुआ है और ये इसका हैंडल है, ओके. ये बकेट लोएस्ट पोजीशन पे है. जब ये बकेट टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाएगा तो अभी ये डायग्राम आएगा, ये सर हैंडल आपने है, बताया था इसके बारे में. मैंने बताया था ना, ये टॉप हाँ मोस्ट सर. पोजीशन पे है. तो यहाँ पे ये बकेट के अंदर पानी भरा हुआ है स्टूडेंट्स, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर विल स्पिल. स्टूडेंट्स क्यों? क्योंकि नाउ द बकेट हैज गॉट अ सफिशिएंट वेलोसिटी, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द टॉप, इफ इट हैज टू बी अंडर रूट rg. अगर उसको लेस देन rg होगा ना स्टूडेंट्स, पानी नीचे गिर जाएगा. ये सेंटर है और ये तुम्हारा हाथ है जिससे तुम होल्ड करके रखो, सीधा पाथ, द पाथ इज सर्कुलर. यहाँ पे भी तुम्हारा फोर्सेस क्या होंगे सर, mg, वेट ऑफ द बकेट नीचे की तरफ जा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि बकेट इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस. तो बाहर की तरफ कौन सा जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जाएगा. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir.
Now take a simple example. Students, can I erase this part? क्या मैं इसको erase कर दूं? Yes. 1 minute. Okay. Whatever you're noting it down, students, please note it properly, huh? Sir, VT is different than VH. Pardon? Yeah, Sir, it has to VT. be. No, VT is velocity at the topmost position, velocity at the highest position. H and T are same variables. Some books will give you H as highest position, T as topmost position. That's why I've given both the variables. Highest or topmost. Agreed? Akshay? Yes, sir. Mihir, are you there, Mihir? Are you getting it? Yes, sir. अभी और एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स. ये जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स, let me put forward in this manner, students. Try to think about students, a car on a going on a speed breaker. Because I don't know about it, तुमने speed breaker के ऊपर अगर तुमने देखा होगा students, a best driver you can consider, you can judge a driving of a person, students, by considering when the car or the rickshaw goes over a speed breaker. Students, अगर तुम्हारे पास में कार है and if you want to judge your dad drives better in that case, और तुम बैकसीट पे बैठे हो, तो you don't have to say anything, just try to judge कि how exactly your dad takes the car on a speed breaker. When he's taking on a speed breaker, he will take the car so smoothly कि तुम्हारा पेट का पानी भी नहीं हिलेगा. That means he's going with a very good velocity under root RG, so that the car doesn't bump onto the surface. वापस ग्राउंड के ऊपर हिट नहीं करता हार्ड. या ऑटो रिक्शा वाला इतना स्मूथली ले लेगा कि the auto rickshaw doesn't hit hard on the ground. लेकिन कुछ ऑटो रिक्शा वाले हैं बिंदा धाड़ लेके जा जाते, तुम ऊपर जम मारते हो, तुम्हारे सर पे लगती है. So now if I ask you, what is the safest speed? The answer is the safest speed of a car to move on a speed breaker. So let us go for same example. ये तुम्हारा speed breaker है students. अगर मैंने यहाँ पे कार ले लिया students, तो ये कार का center of gravity होगा, है ना? कार का center of gravity है, तो ये क्या होगा? Height of the center of gravity from the speed breaker. ये speed breaker के यहाँ पे अगर देखोगे तो ये radius हो जाएगा, ये R plus H मिला के क्या हो जाएगा? Capital R हो जाएगा. तो समझ में आ रहा है students? Yes, sir. स्टूडेंट्स, कोई भी कार लिखोगे, ऑटो रिक्शा लेगा, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ऊपर होगा ना. सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टूडेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द एंटायर वेट ऑफ अ बॉडी इज सपोज्ड टू बी Yes, sir. concentrated. It can lie inside the matter, it can lie outside the matter. So what exactly the radius of the circular path? अभी तुम्हारी जो ऑटो रिक्शा या कार जाएगी वो ऐसे जाएगी, और ये स्पीड Yes. ब्रेकर है ना. तो now what should be the minimum speed required so that the car should not bump? हम वो वाला कर रहे हैं, हमें वो वाला चाहिए. तो अभी देखो फोर्सेस देखो कौन से हैं. तुमने सर कार स्पीड ब्रेकर के उस तरफ है, तो सर ऐसा करते हैं ना, कार का जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट होगा. ऊपर No. कौन सा होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा. क्या ये कार सीधी जा रही है, कार सर्कुलर पाथ में जा रही है Sir, स्पीड ब्रेकर के ऊपर? circular path. तो एक और एक फोर्स होगा, दैट इज व्हिच फोर्स? Centripetal. हाँ, तो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा. तो नाउ इफ आई से योर एन, आर यू गेटिंग इट? Your N balances what exactly I'll consider will be equal to the normal reaction force, your mg and your force centripetal we consider. Yes. Agreed? यहाँ पे your N is in this case ना, लेकिन तुम्हारी कार अगर सर्कुलर मोशन जा रही है, मुझे बताओ कौन सा फोर्स ग्रेटर होना चाहिए स्टूडेंट्स? Your weight of the car should be greater than the normal reaction force. Students, the difference of the two forces will account for the car to perform circular path. ये जो फोर्स सेंट्रिपिटल है वो है क्या स्टूडेंट्स? ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है. तो इट्स mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. क्या ये क्लियर हुआ Yes. स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ?
weight of the car is acting downwards. Normal reaction force is acting upwards. Is the car going on a circular path? Yes. Is it coming down? Is it coming down? Yes, it is coming down. So mg has to be greater than normal action force. Mg, when it's greater than m, the difference of the two will be equal to the centripetal force. At the topmost position, we consider for a fraction of a second, we take the normal reaction force of the car to be equal to 0. M gets cancelled. So what's the velocity? Under root rg. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. यानी students, अगर किसी ने पूछा what is the minimum speed of a car on a speed breaker so that the car should not bump onto the ground? Under root capital Rg. R is the radius of the circular path and G is gravitational acceleration. अगर बाई चांस तुम्हारे डैड ने स्पीड ब्रेकर लिया और स्पीड ब्रेकर के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के टाइम पे ध्यान से सुनना, उनका स्पीड अगर लेस देन अंडर रूट आरजी होगा ना, तो कार ऊपर जाएगी नहीं, वापस नीचे आ जाएगी. ये ध्यान में रखना, स्पीड ब्रेकर के ऊपर नहीं जाएगी, नीचे आ जाएगी. अगर तुम्हारे कार की स्पीड ग्रेटर देन अंडर रूट आरजी होगी तो कार नीचे बम्प मारे. लेकिन अगर वो इक्वल टू आरजी होगा, अंडर आरजी, तो वो स्मूथली स्पीड ब्रेकर से होते हुए चली जाएगी without letting you know कि नहीं, we have got a joke in that case. So see students, in all these examples, what am I trying to get at? The conclusion which I'm going to take it will be a body on a convex bridge. A body on a convex bridge should have a minimum speed of under root rg to trace its path. Is this a convex bridge? Yes. Is this a convex bridge? Yes. Is this a convex bridge? Yes. For a body to trace its path on a convex bridge, what is the minimum speed required? Under root r g. R is the radius of the circular path and g is gravitational acceleration. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. Yes, Prisha says due to overweight of the car. Due to Prisha says, Prisha unmute करके पूछो ना. मैं भूल गया वापस क्या लिखा था. Prisha, student Prisha, जल्दी Prisha. अच्छा. Prisha says कि due to overweight. Prisha, I told you to unmute. Prisha says due to overweight of a car, does a car will touch? Students, of course. अभी देखो overweight का मतलब the car, अगर मैं overweight बोलूँगा students, तो still my mg is greater. Touch नहीं होगा. Touch नहीं होता है Prisha. कभी भी भले तुमने overweight का मतलब अगर तुमने passengers को थोड़ा सा ज़्यादा touch नहीं होगा. Touch कहाँ पे होता है मालूम है Prisha? Only in India. इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, क्योंकि वहां पे स्पीड ब्रेकर सारे अलग होते हैं. सारे ऑल ओवर इंडिया में तुम्हें स्पीड ब्रेकर एक ही साइज के नहीं मिलते हैं. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? स्पीड ब्रेकर्स का परफेक्ट लेवलिंग होना चाहिए, परफेक्ट हाइट होना चाहिए. यहाँ पे सारे स्पीड ब्रेकर्स एनी हाउ दे ट्राई टू थ्रो इट. तो तुम्हारी क्या, जो नीचे एक रॉड होता है जिसको बोलते हैं चेसी, द कार विल ब्रश थ्रू इट. Okay, through the GC is rubbing that part of it. या तुम्हारा जो पेट्रोल टैंक होता है वो हिट करता है पीछे का. The petrol tank is there in the car, वो थोड़ा सा लोअर होता है, वो हिट होता है. It's because of that. यही चीजें तुम अब्रॉड चलाओगे तो अब्रॉड नहीं होगा, क्योंकि वहां पे स्पीड ब्रेकर का मेजरमेंट्स वगैरह परफेक्ट डायमेंशंस लेते हुए, कार की डिफरेंट कार्स होती है, उनके सबके ग्राउंड हाइट लेते हुए दे ट्राई टू कंस्ट्रक्ट इट. पर यहाँ पे अनइवनली होता है. स्टूडेंट्स देखो ना, तुम खुद ही देखोगे कहाँ पे स्पीड ब्रेकर एकदम बड़ा है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर जैसे लगता ही नहीं है. इट्स एवरीवेयर इट्स डिफरेंट. ओके, लेकिन अगर mg बढ़ गया है स्टूडेंट्स, सो दिस फोर्स इज ग्रेटर देन दैट. तुम्हें और इफेक्टिव मिल गया तुम्हें, तो तुम्हें स्पीड तो कंट्रोल करनी पड़ेगी. ओके, क्या मैं इसको इरेज कर दूं स्टूडेंट्स अभी?
Yes, sir. Okay. So now when somebody asks you what is the velocity at the highest position for a particle performing vertical circular motion, which is non-uniform, students, इसमें भी uniform हो सकता है. Vertical circular motion can it be uniform, students? Students, can it be uniform? क्यों नहीं? अगर मैंने मोटर से रन किया तो यूनिफॉर्म है. Have you seen the London's eye, students? The London wheel we consider. Okay, जहाँ पे तुम बड़े से giant wheel के अंदर बैठते हो और वो एक constant speed से जाता है ना? और अगर तुम देखोगे, अगर तो if you go to Singapore flywheel, have you seen Singapore? अगर तो हो सके तो वीडियोस वगैरह देखना. सिंगापुर फ्लाईव्हील स्टूडेंट, सिंगापुर फ्लाईव्हील एक बड़ा सा फ्लाईव्हील है, उसके बाजू में ही स्टूडेंट्स फरारी का रेस ट्रैक है. अगर तुम वो फ्लाईव्हील में बैठोगे स्टूडेंट्स, तो इट टेक ऑलमोस्ट 50 मिनट्स, 45-50 मिनट्स के आसपास टू कंप्लीट वन साइकिल. लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड, वो इट्स एक्चुअली डाइनिंग एरिया स्टूडेंट. वो रेस्टोरेंट है, कोई टाइप का रेस्टोरेंट है. वहाँ पे तुम्हारा बड़ा सा डाइनिंग टेबल होता है और वहाँ पे तुम फूड सर्व किया जाता है और वहाँ पे तुम पूरा पूरा सिंगापुर देख सकते हो स्टूडेंट्स. When you go into that particular wheel, you can see the entire Singapore, because students, Singapore is very small enough. वो शुरू होता है बैंड्रा से और अंधेरी में खत्म हो जाता है. पूरा सिंगापुर तो स्टूडेंट्स तुम 2.5 घंटे में घूम सकते हो. विद इन 2.5 hours 3 hours के अंदर पूरा सिंगापुर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब घूम सकते हो तुम वहाँ पे. तो ये एक बड़ा सा व्हील है, उसको बोलते हैं सिंगापुर फ्लाई व्हील. लेकिन वहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, कैप्सूल होती है स्टूडेंट, जहाँ पे तुम बैठते हो. कम से कम 10-12 जन आराम से बैठ सकते हैं कंफर्टेबली इनसाइड इट. और वो कैप्सूल मूव होती है, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो वो यूसीएम है लेकिन है वर्टिकल. यहाँ पे हम नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड गोज ऑन चेंजिंग. What is the velocity at the topmost position? So the velocity at the highest position which I'm getting it, the minimum velocity at the higher position will be under root rg. जैसे मेरे को यहाँ पे मिला, ध्यान से सुनना. Now if a body reaches the lowest position, students यहाँ से यहाँ पे, ये तुम्हें पता है, ये है तुम्हारा under root rg at the highest position. Now if I say if the body is reaching at the lowest position, so can I find out the formula for body at the lowest position? Why not? Why not? हाईएस्ट से लोएस्ट पे आ रहा है, ये सेंटर है स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा रेडियस है. तो कहने से यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, एनर्जी का यूज कर सकते हो तुम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सिंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड, आई गेटिंग इट, वी कैन गेट योर आंसर. आए ना स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. यस, सो यू कैन गेट योर आंसर इन दैट केस. तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया स्टूडेंट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पोजीशन, तो यहाँ पे कौन सी होगी? फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पोजीशन. और यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी? ये तो ग्राउंड लेवल है ना स्टूडेंट्स. लोएस्ट पोजीशन का मतलब क्या हुआ? ग्राउंड लेवल. यहाँ पे कौन सी होगी? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी स्टूडेंट्स. दोनों को इक्वेट कर दो. तो इक्वेट करने के टाइम पे यहाँ पे क्या होगा? हाफ एम वी एच द होल स्क्वायर प्लस एम जी. व्हाट इज द हाइट? What is the height for which the body is going to drop down? So the height is equal to twice the radius. ये 2r हो जाएगा, is equal to half m velocity at lowest position the whole square. क्या ये क्लियर हुआ? मैंने क्या यूज किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. Students, is it clear? Yes, sir. Law of conservation of mechanical energy, and law of conservation of mechanical energy में the total mechanical energy I have taken it to be constant in that case, है ना? तो we are getting an equation. अब यहाँ से तुम्हें velocity मिल सकता है, क्यों नहीं? ये देखो, half m, what is the velocity at the highest point? से ये square हो जाएगा तो ये rg आ जाएगा, plus ये होगा 2mgr, half m vl the whole square. Students, what is half plus 2? 5/2 mgr, which is equal to half m vl the whole square. Students, ये देखो 2 gets cancelled, m gets cancelled. Are you getting the velocity at the lowest point? Students.
So what is the velocity at the lowest point? The velocity at the lowest point for a particle performing vertical circular motion which is non-uniform will be always under root 5 gr. That's the velocity at the lowest position. This is velocity at the highest position. और हम लोग क्या यूज किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज किया. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी एट द डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, तो वही होगा. तुम यहां से यहाँ पे ले लो तो सर यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होगा, यहाँ पे भी काइनेटिक और पोटेंशियल होगा. पोटेंशियल अगर तुम देखोगे तो व्हाट एग्जैक्टली यहाँ पे अगर तुम 2r लेते हो तो यहाँ पे तुम्हारा r होगा. तुम यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हो ना. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे ले लो. टोटल मैकेनिकल एनर्जी ओनली काइनेटिक, टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. सॉल्व करो. चलो anyone solve this and get the answer for velocity along the diameter. Go for law of conservation of mechanical energy students. Lowest position or diametrically. Lowest position क्या है? Ground level है. तो यहाँ पे potential energy होगी students. हाँ students. That's 0. Students, will the object will have potential energy or will it be 0? 0. 0. It will have only kinetic. But now when the object reaches over here at the diameter, will it have potential energy? Yes, sir. And what is potential? What is the height at which the body is raised from the ground? R. Equal to radius r. Does it have any kinetic energy? Yes, because it's in motion. I need to find out this velocity and the diameter. Solve. Anybody can tell me what answer you're getting it? Same way, I'm not solving it for you all. Students, तुम्हें solve करना है. Get me the answer. Yes, anyone? Yash, Vadim, Sujit, Subham, Shrina, Richa, Prisha, Pratham, Prapti, Nitto, Minu, Prisha, Kaushik, Jyoti Singh, Jyoti, TP Pathak के दोनों Jyotis are not answering at all. Parents को complaint करना जरूरी है. जब भी meeting होगी, I'm going to speak to your parents, Jyoti Singh and Jyoti. Jai, Harshada, Diya, Ayan Khan, Avnit Singh, Rishi, Dhruv, Umer is also not responding at all. Preet also have stopped. Akresh also is not answering. And hardly 3 students are answering over here. 4. Shreya, Gauri, Mihir and Rakshit. ये 4 अगर classroom में से चले जाए ना students, the classroom is dead. I feel like that the classroom is dead. If these 4 candidates go away, अगर चारों एक दिन अगर lecture miss कर दे, तो classroom is dead. No response, no reply. ऐसा feel हो रहा है. I know, why don't your parents look into all these things? Yeah, this is something. कोई प्रॉब्लम नहीं ना. जब भी रेगुलर लेक्चर शुरू होंगे तो उस टाइम पे देखना व्हाट इज हैपनिंग. उस टाइम पे तो आई विल कॉल योर पेरेंट्स एंड आई विल मेक देम टू मीट. जब भी आंसर नहीं दोगे तो एक सीधा कॉल जाएगा उसी टाइम पे तुम्हारे घर के अंदर और नेक्स्ट डे तुम्हारे पेरेंट्स को मैं बुलाऊंगा सेंटर्स में. आई विल सी टू इट. तभी तो और अच्छा होगा. तभी तो और अच्छा होगा. पेरेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड क्योंकि मुझे सामने सामने दिखाई देगा कि परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. यहाँ पे तो पता नहीं चलता. यहाँ पे तुम तो बोल दोगे हमारा ये नहीं चल रहा है, हमारा वाईफाई नहीं चल रहा है, हमारा साउंड बंद है, हमारा फलाना बंद है, ढिकना बंद है. यस रक्षित. You can use the formula, students, using law of conservation of energy. You can use the formula V square is equal to U square plus 2s.
U कितना है 5GR माइनस 2GR, तो क्या आंसर आया √3G, है ना? Yes. तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या मिलेगा? मतलब वेलोसिटी एट द डायमीटर √3GR. Since the velocity at the diameter will be √3GR, that's the speed. And देखो स्टूडेंट्स, लोवेस्ट पोजीशन पे तुम्हें सबसे ज्यादा वेलोसिटी मिल रहा है, जैसे तुम डायमीटर की तरफ गया इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ गया तो कम हो गया, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे तो और कम हुआ, लेकिन इट हैज सम वेलोसिटी स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ब्रॉट टू जीरो. जीरो होगा तो वो मोटर बाइक वाला गिर जाएगा, स्टोन तुम्हारे सर पे गिरेगा, या जो पानी भरा हुआ है बकेट वो तुम्हारे सर पे गिर जाएगा. स्टूडेंट्स, आई गेटिंग इट? सो इन दैट केस अगर तुम्हारी वेलोसिटी जीरो होगी तो तुम्हारी कार आगे ही नहीं जाएगी. तो ये मिनिमम स्पीड है 100 rg, वापस नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ रही है √3GR and back √5GR. This is what we call as non-uniform. The velocity goes on changing. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Now students, I want the formula for velocity, instantaneous velocity at any position. Students, अब आंसर देखो स्टूडेंट्स, बॉडी यहाँ पे था, मैंने बॉब को या स्टोन से धागा बांधा हुआ था स्टूडेंट्स, ये स्टोन है, I getting it? I have started with the string. Now the stone has reached at any position P. मुझे चाहिए velocity at that position. Let us say the stone has displaced at an angle theta with the vertical. Now can you give me an answer for velocity at point P? हाँ students. So now see, look at the diagram students. इसी diagram को मैं magnify कर रहा हूँ students. ये देखो कि ये center है तुम्हारा, ये vertical position है students stone का, और ये stone अभी यहाँ पे है. This is a circular path students. Can I drop a perpendicular? Yes, ये theta होगा. तो मुझे ये बताओ, ये क्या है? हाइट, ये ग्राउंड लेवल हो गया, है ना? ये हाइट हो जाएगा. What is this we consider? Length of the string. ये पूरा लेंथ, तो कैन आई से दिस becomes L minus H. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes. Hope this part is clear students. The stone is going from point L to point P. I want to find out velocity at point P. तो अभी देखो, या तो तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करो, या सिंपली आई कैन यूज द फॉर्मूला V square is equal to U square plus 2AS. Can you find out height students? Can you find out height in this? Yes. What is cos theta? Students, look over here. What is cos theta over here? Cos theta in this right angle triangle will be adjacent upon hypotenuse. Students, Yes. cos theta is adjacent, so can I say it's L minus H by L? So cos theta will be equal to 1 minus H by L. So what exactly H is equal to L in bracket 1 minus cos theta? क्या ये हाइट का फॉर्मूला क्लियर हुआ? Yes, sir. मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी एट पॉइंट P. तो मुझे ये चाहिए, कैन आई से वेलोसिटी एट पॉइंट P द होल स्क्वायर. What is the initial velocity at the ground level? Is U square. वो तो तुम्हें पता होना चाहिए. देते हैं या नहीं भी देंगे. They might give you initial velocity 0 or initial velocity can be taken in this manner, 105GR. It depends what they have given it to you. मुझे यहाँ पे चाहिए. Plus 2 into, what is acceleration gravity? G. Minus G. So ये होगा minus 2G. What is H? Are you getting it? Sir, L. Yeah, very sorry. H is L into bracket 1 minus. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. अगर तुमने रूट साइन, अगर सपोज तुम्हें v चाहिए तो क्या करोगे? विद इन रूट. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? विद इन रूट. Yes. स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. अभी ध्यान से देखा स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला दिया मैंने, ये फॉर्मूला दिए, और ये फॉर्मूला से ही शायद रक्षित ने या किसी ने ये फॉर्मूला लेके यहाँ पे आंसर निकाला डायमीटर का. स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला डायरेक्टली है ना. मैंने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी एट द डायमीटर, डू यू नो द इनिशियल वेलोसिटी? तो यहाँ पे 5GR आएगा स्टूडेंट्स, इनिशियल 5GR आएगा, आया ना? Yes. Yes, sir.
एग्रीड। मुझे वेलोसिटी एट द डायमीटर चाहिए, -2g, एल के जगह पे क्या आएगा, r, -2gr आएगा, हाँ या ना, because the body has reached that point diameter. 1 minus, what does angle theta becomes, because the body has reached the diameter, theta tending to be 90 degree. Students, when the body reaches from lowest position to the diameter, will theta will tend to be 90 degree. Yes, sir. Yes, sir. Cos of 90 क्या बन जाएगा, cos of 90 क्या बन जाएगा, हाँ स्टूडेंट्स, cos of 90 क्या बन जाएगा, 0। 0. तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो -2gr होगा, -2gr होगा, ये क्या है 5gr, 5gr -2gr। Yes, sir. हुआ स्टूडेंट्स, are you getting it? Yes, sir. So please to keep in mind, for a vertical circular motion which is non-uniform, students, the velocity goes on changing at each instant we consider. Okay, the formula for velocity at any instantaneous position is √u² minus 2gl into bracket 1 minus cos theta. Velocity at the lowest point is maximum, the highest point is less but not minimum, it's not equal to 0. So √5gr, √3gr, √gr, √3gr and back √5gr for one complete cycle. स्टूडेंट्स अभी ध्यान से सुनना, अगर मैंने यहाँ पे सपोज, अगर तुम्हारा मोटर बाइक वाला है स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे अगर मैं सपोज मोटर बाइक वाला लेता हूँ, तो मोटर बाइक वाला जब भी अपनी बाइक शुरू करता है, तो जब भी वो बाइक शुरू करता है बेचारा, तो उस टाइम पे वो स्विंग करता है, तुम्हें पता है, तुमने देखा होगा स्विंग कर रहा है, यानी क्या कर रहा है वो एक सफिशिएंट वेलोसिटी देना चाहता है, he'll raise it, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, he wants that confidence first, he wants that confidence in that case. सिंपल एग्जांपल, तुम लेक्चर्स के बाद में एक बकेट ऑफ वाटर लो और फिर तुम अपना हाथ मूव करो लोएस्ट पॉइंट पे, तुम्हें डर लगेगा उस टाइम पे, यार पानी गिर गया तो, यहाँ कहाँ पे गिर गया तो मम्मा मार देगी, लेकिन फिर तुम क्या करो, उसकी वजह से तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड देते हो, तो जैसे तुमने स्पीड दे दिया विच इज मच मोर ग्रेटर देन 105 स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, तुम्हारा ऊपर की तरफ जाएगा। अगर बाय चांस तुमने स्पीड कम कर दिया तो ये साइकिल ऊपर की तरफ जाएगी, वापस नीचे आएगी, ऑसिलेटरी मोशन होगा। एंड इफ द स्पीड इज लेस देन 105 GR, if it's equal to 103 GR, it might reach at the diameter. It might reach at the diameter if it is 103 GR. But if it is less than 103 GR, will it reach at the diameter? No. What kind of motion is going to perform? Oscillatory motion. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Can I erase now, students? Students, can I erase it? Yes, sir. Okay, students. So for vertical circular motion, students, we have got the velocity. Okay, we got velocity at any instantaneous position. Okay. Now the same stone is tied with the string, students. मुझे चाहिए expression for tension. Students, I want you to get me the mathematical expression for tension of the bob or of the stone. टेंशन ना, क्योंकि वो धागे से बांधा हुआ है इसलिए टेंशन है। टेंशन जब भी मैंने पूछा तो उसका मतलब स्ट्रिंग से होल्ड है। ओके, तुम वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सिंपल एग्जांपल सुन, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारा चार्जर होगा, तो चार्जर का एक साइड का जो अडाप्टर है वो थोड़ा सा हैवी होगा, फिर चार्जर ऐसा है, ओके, और फिर उसको ऐसा घुमाओ वर्टिकली
आई गेटिंग इट? आई गेटिंग इट? ऐसा करना नहीं, लेकिन वो वायर लूज कांटेक्ट हो जाएगा। अगर चार्जर सही नहीं है तो लूज कांटेक्ट भी हो सकता है स्टूडेंट्स। आई गेटिंग इट? लेकिन अगर तुमका तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन पी पे आता है तो मुझे चाहिए व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर टेंशन एट एनी इंस्टैंटेनियस पोजीशन पी फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन व्हिच इज नॉन यूनिफॉर्म। अभी क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आई वांट द फॉर्मूला फॉर टेंशन। एनीबॉडी हु कैन गिव मी द फॉर्मूला फॉर टेंशन? मैंने तुम्हें पूछा है फॉर्मूला टेंशन का, लेकिन आउट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स? out of 30, एक स्टूडेंट भाग गया। out of 30, 26 students, 25 students give me tension because I don't reply, है ना? मैंने तुम्हें पूछा टेंशन और तो 26 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स मुझे टेंशन देते हैं by not answering at all। और रक्षित ने आंसर दे भी दिया। सबसे रक्षित आंसर यस। हाँ रक्षित, तुम्हारा साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई फील लाइक दैट। श्रेया, योर आंसर इज करेक्ट। यस सर, मैं कंफ्यूज था। श्रेया का आंसर सही है। Anybody else? Yes, Mihir waiting for you. Gauri waiting for you. If we all to answer, we'll discuss fast. Derive the formula for tension and बाकी सब बाकी दूसरों को पूछने की जरूरत नहीं है। अरे दिया for the first time in her life she is replying. दिया जोशी, ये कहाँ से सूरज उगा है? क्या बात है मिस जोशी, काम छो मौजामा। मिस जोशी काम छो मौजामा। ओके रक्षित, यस प्रॉपर कंपोनेंट कॉस्ट थीटा। क्या बात है, दिया इज मौजामा। वेरी गुड, वेरी गुड। यस कम ऑन गौरी, आई एम वेटिंग फॉर यू। यहाँ पे दिया ने आंसर दिया है, लेकिन फाइन करेक्ट है। दिया ने दिया आंसर। स्टूडेंट्स, श्रेया ने भी आंसर दिया है, रक्षित ने आंसर दिया है। व्हाट अबाउट मिहिर एंड गौरी and anybody else who wants to answer? Kindly post your answers or you can unmute. Okay, can anybody derive those who have answered? Can anyone derive it, students? Diya, can you derive, Diya? Can you unmute yourself and derive it? Tension at point P. मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे अनम्यूट करके आंसर चाहिए। Now she's not replying. See. Yes, anybody else? Either Shreya or Akshat. Diya is trying. Students, मुझे बताओ, जब एक conical pendulum था, तो was the body was moving in a horizontal plane? हाँ students, body was moving on a horizontal plane. तो वहाँ पे हमने किसको रिजॉल्व किया था? टेंशन को रिजॉल्व किया था ना, है ना? हॉरिजॉन्टल फोर्स एक चाहिए था फॉर
body to perform circular motion, and that becomes a component of the tension was a centripetal force. Now when I speak about vertical circular motion, students, तो देखो सबसे पहले तुम फ्री बॉडी डायग्राम की हिसाब से तो कितने फोर्सेस एक्ट हो रहा है एट पॉइंट पी। तो जब भी पार्टिकल यहाँ पे रीच हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ये तो है टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये mg है स्टूडेंट्स जो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। एग्रीड। तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये है टेंशन T, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, एंड द बॉडी इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, okay, it's in anti-clockwise direction, it is vertical circular motion which is non-uniform। यहाँ पे mg नीचे की तरफ है, तो मैं किसको रिजॉल्व करूंगा? क्या मैं टेंशन को रिजॉल्व करूँ या mg को रिजॉल्व करूँ? you go for mg, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अगर हाउ टू अंडरस्टैंड, टेंशन को रिजॉल्व करूंगा तो एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा फॉर द बॉडी टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल पाथ। ये तो वर्टिकल है, तो मैं mg को रिजॉल्व करूंगा ना, एक कंपोनेंट ऐसे होगा और दूसरा ऐसे होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं टेंशन को रिजॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स, सी आई एम गेटिंग टू फोर्सेस, दिस इज योर वर्टिकल, ये तुम्हारा थीटा है। जब भी बॉब यहाँ पे था स्टूडेंट्स, जब भी बॉब यहाँ पे था मीन पोजीशन पे स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन पे, तो उस टाइम पे क्या फोर्सेस एक्ट थे स्टूडेंट्स? तो तुम सीधा बोलोगे सर जब बॉब यहाँ पे था तो टेंशन ऊपर की तरफ था, mg नीचे की तरफ था। लेकिन जैसे यहाँ पे आया तो टेंशन इस तरफ चला गया, mg अभी भी वर्टिकली नीचे की तरफ है। अगर ये थीटा है स्टूडेंट्स, तो कहने से ये भी थीटा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। mg को रिजॉल्व करोगे तो ये क्या बन गया सर? mg cos थीटा बन गया, और ये क्या बन गया तुम्हारा? mg sin थीटा। स्टूडेंट्स ये mg sin थीटा है क्या? ये भी MCQs में पूछता है स्टूडेंट्स, mg sin थीटा है क्या? Anybody can tell me what is mg sin theta, students? Students, what is mg sin theta? Fast. Students, it's a force. Didn't you do laws of motion? Inclined plane. If the block doesn't get enough force along the inclined plane to move vertically upwards, which force causes the block to slide down? Students, mg sin theta ना? हाँ, इंक्लाइन प्लेन विच, तो भूल गया है, वहां पे mg sin थीटा कुछ अलग है और यहाँ पे अलग है। ये भी तो इंक्लाइन प्लेन है ना, देखो ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में देखो, ये भी तो इंक्लिनेशन, तभी जाके तुमने v²=v² + 2s यूज किया था रक्षित। रीजन क्या है? वो तुमने स्टूडेंट्स, ये आर्क फॉर्म है, आर्क फॉर्म को तुमने लीनियर इक्वेशन क्यों यूज किया बताओ? रीजन क्या? भाई ये तो सर्कुलर मोशन है, तो तुमने लीनियर इसलिए अज्यूम किया कि ये सोचो कि अगर ये पाथ बहुत ही छोटा है तो point lowest and point P are not far away from each other. So students, the length of arc is nearly equal to the length of the chord. The length of arc is exactly equal to the length of chord, considering lowest point and P to be very close to each other. तो एक inclined plane हो गया ना। अभी मैं अगर इसको डायग्रामेटिक ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन कर दूं, यहाँ पे परपेंडिकुलर कर दूं, तो ये एंगल थीटा हो गया इंक्लाइंड प्लेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे mg sin थीटा है क्या? स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, यहाँ पे mg sin थीटा is restoring force। स्टूडेंट्स ये रिस्टोरिंग फोर्स है, यानी अगर मोटर बाइक वाले को या स्टोन को या कोई ऑब्जेक्ट इन हेमिस्फेरिकल शेल है, अगर उसको सफिशिएंट वेलोसिटी √5 g नहीं मिलेगी, less than √3 gr, suppose if I say it's √2 gr, तो वो ऊपर तो जाएगा, लेकिन क्या वो आगे जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। तो कौन सा फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच के लेके आ रहा है, बैक टू इट्स मेन पोजीशन? mg sin theta। So students, mg sin theta is a restoring force which is acting on the particle to bring the particle back to its which position? मेन पोजीशन। ये ध्यान में रखना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे हमें mg sin theta कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि हमारा मोशन तो आगे की तरफ जा रहा है, बॉडी नीचे आ ही नहीं रहा है, तो तुम्हारे फोर्सेस ये होंगे, T अंदर की तरफ जा रहा है, mg cos थीटा बाहर की तरफ आ रहा है। लेकिन क्या ये पाथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है? हाँ सर, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है।
यानी my T has to be greater for circular motion. For circular motion, I need force centripetal. So can I say tension has to be greater than mg cos theta? The tension at point P should be greater than mg cos theta. So can I say tension minus mg cos theta, the resultant of the two forces is your force centripetal, which is required for the body to perform circular path. So what is the formula for tension at any instantaneous position? Force centripetal is mv square by r. ये इस तरफ चला जाएगा mg cos theta, and that's your formula for tension at any instantaneous position. Friends, is this formula clear to all of you now? Friends, is it clear? Yes. So now when somebody asks you what's the formula for tension at any instantaneous position for a particle performing vertical circular motion which is non-uniform, students, then tension is given by the formula mv square by r plus mg cos theta. Theta is always the angle formed with the vertical. ये भी ध्यान में रखना. जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है तो क्या तुम टेंशन को रिजॉल्व करोगे या mg को रिजॉल्व करोगे? mg को रिजॉल्व करना स्टूडेंट्स. ये गांठ बांध लेना सर्कुलर मोशन में. जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा स्टूडेंट्स, जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा तो टेंशन को रिजॉल्व करो. वर्टिकल प्लेन में होगा mg को रिजॉल्व करो. बैंकिंग ऑफ रोड होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को रिजॉल्व करो. स्टूडेंट्स, जहां पे तुम्हें सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगा और वो जाता है फॉर अ पर्टिकुलर फोर्स, उसी को तुम्हें रिजॉल्व करने की जरूरत है. उसके कंपोनेंट्स लेना है. एक कंपोनेंट हमेशा तुम्हारा सेंट्रिपिटल बनेगा बनेगा बनेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू थिंक व्हाइल सॉल्विंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. You can judge yourself how to go about it. Is it clear, students? Yes. Now, students, from here, I want to find out the value of tension. Students, can you give me the value of tension at the highest position, diametrically opposite position, and lowest position? So I want three mathematical relations for tension at the highest position, diametrically opposite position, lowest position. Given to you, tension at any instantaneous position is mv square by r plus mg cos theta. यहाँ पे TP का मतलब क्या हुआ? Tension at any instantaneous position P. M का मतलब mass of the particle performing circular motion. R radius of particle. What does V stands for? Velocity of a particle at point P. ये ध्यान में रखना, ये velocity of the particle at that instant. mg cos theta. Theta क्या है? Theta is the angle with the vertical. मुझे अभी चाहिए tension at highest position, diametric opposite position, and lowest position. Can anybody give the answer for this? सर सारे के वैल्यूज फाइंड. Pardon? सर सबके वैल्यूज फाइंड करना है. Yeah. You have to find tension at the highest position, at the lowest position, and the diameter. It means a kind of a mathematical relation you'll be getting. Yes, Shreya is correct. Shreya has got the lowest point correct. Shreya has got for the highest position.
My dear, for highest position, it's incorrect. Yeah. Can one of you all can unmute and answer, students? Sir, is it 0 at the highest position? Absolutely correct. And 5 mg at lowest? No, over there you are incorrect. Over there, Shreya is correct. Sir, at lowest it would be 6 mg. 6 mg, sorry. I took Yeah. the value of cos theta wrong. Absolutely correct. 6 mg. Highest position is 0. And diametrically opposite will be 3 mg. Yes. Students, it's easy for one to get it, students. अभी देखो मैंने ये concept क्या है, students? Students, ये concept exactly जो हम लोग ने velocity जैसे निकाला ना, students, वो तो मैंने students पहले velocity यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, है ना? फिर मैंने instantaneous, अगर मैं directly velocity of instantaneous position में दे देता और फिर मैंने पूछता तो क्या तुम निकाल सकते थे? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें initial velocity मालूम ही नहीं है। लेकिन अभी अगर initial मैंने कहाँ की भी दे दी तो तुम यहाँ की फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला। वैसे ही अभी मैंने टेंशन का फॉर्मूला दे दिया। टेंशन को फॉर्मूला लाने के लिए मैंने mg को रिजॉल्व किया। रिस्टोरिंग फोर्स की तो जरूरत नहीं है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ऊपर की तरफ जा रहा है एंड यू नीड सेंट्रिपिटल फोर्स, है ना, और वो रेडियली इनवर्ड फोर्स है। तो स्टूडेंट्स मेरा t हैज टू बी ग्रेटर देन mg cos थीटा कंपोनेंट ऑफ mg। So T minus mg cos theta will be equal to the necessary force required for the body to perform vertical circular motion. तो ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ। अब मैंने क्या पूछा है, फाइंड आउट टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन। अगर सपोज ये लोवेस्ट पोजीशन पे होता है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट अगर लोवेस्ट पोजीशन पे होता है तो लोवेस्ट पोजीशन पे थीटा क्या बन जाएगा, 0 डिग्री। हाँ या ना? हाँ स्टूडेंट्स, लोवेस्ट पोजीशन पे होगा तो थीटा 0 हो जाएगा। अगर ये पॉइंट को मैंने यहाँ पे ले लिया डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, सो व्हाट एग्जैक्टली थीटा बिकम्स, सर यहाँ पे मेरा थीटा बन जाएगा 90 डिग्री, π/2 सर्कुलर, π/2 रेडियंस। अगर मैंने पॉइंट पी को हाईएस्ट पोजीशन पे ले लिया तो मेरा थीटा कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे मेरा थीटा कितना हो जाएगा, पाई रेडियंस या पाई सर्कुलर। अभी तो मैं तीनों डिफरेंट एंगल्स में लिए। डू यू नो द वेलोसिटीज एट ईच पोजीशन? यस। अगर मैं लोवेस्ट पोजीशन लेता हूं, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पोजीशन? √5 GR। सुन यानी यहाँ पे ये VP है ना, तो अगर मैं लोवेस्ट पोजीशन तो P की जगह पे L आएगा वेरिएबल, समझ में आ रहा है? TL आएगा, टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन। बस हो गया तुम्हारा, सिर्फ वेरिएबल्स डालने स्टूडेंट्स और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अगर मैं डायमीटर के पे चला गया स्टूडेंट्स, तो व्हाट्स वेलोसिटी अलोंग द डायमीटर? अलोंग द डायमीटर √3 GR, है ना। और अगर मैं हाईएस्ट पोजीशन पे चले गया स्टूडेंट्स, व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ द हाईएस्ट पोजीशन? 100 GR। एग्रीड? Yes, sir. Now everybody can you solve and get the answer? देखो मेंटल मैथ्स करो। तो चलो हम हाईएस्ट पोजीशन पे ले जाते हैं। हाईएस्ट पोजीशन के लिए थीटा क्या होगा?
Theta 180 होगा 180 student. degree. What is cos of 180? +1 or -1? -1. -1 तो प्लस इंटू माइनस तो ये -mg होगा. हाईएस्ट पोजीशन के लिए -mg होगा. मेंटल मैथ्स कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मेंटल मैथ्स कर रहा हूँ, मैं भी नहीं लिख रहा हूँ. There are some students say, Mama, he solves the derivation, he does it orally, he doesn't write down everything on the board. I'm not able to follow him. Please, this is simple 7th standard, 8th standard stuff. Don't expect that one should tell these things. Now, when information is given to you, you should be good enough in your maths also. Students, ये physics नहीं है, maths है. So please, थोड़ा सा wise बनो and तुरंत answer लेके आओ. Since I don't have much space, that is why. यहाँ पे स्टूडेंट देखो cos of 180 will be -1 तो -mg ये होगा. Highest position पे उसका velocity कितना है? What is the velocity over here at the highest position? Students, ये square हो जाएगा तो कहना है what is the answer over here will be? RG. RG. तो RR will get cancelled. बचेगा mg, है ना? Plus mg. यहाँ पे क्या था हमारा? -mg. What is plus mg minus mg? What is plus mg minus mg? Tension at highest point will be 0. समझ में आ रहा है? Tension at lowest point, tension along the diameter. Now let us go for tension at the diameter. Since diameter अगर मैं जाता हूँ तो थीटा कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स? How much is theta at the diameter? थीटा कितना हो जाएगा? So theta is 90. What is cos of 90? 0. 0. तो ये पूरा 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, पूरा 0 हो जाएगा. What is the velocity at the diameter? What is the velocity of the particle at the diameter? √3gr. लेकिन ये स्क्वायर है तो क्या होगा यहाँ पे? स्टूडेंट्स सिंपली 3gr Yes, sir. है ना. RR will get cancelled तो क्या बचा? 3mg. Agreed? 3mg. What is the velocity along the tension at the diameter? 3mg. What is the tension at the lowest position? Lowest position पे थीटा क्या बन जाएगा? 0. थीटा बन जाएगा 0. What is cos of 0? Cos of 0 1. तो ये सिर्फ mg बचेगा. Agreed? What is the velocity at the lowest position? यहाँ पे lowest position आएगा. √5 स्क्वायर है. यहाँ पे क्या लिखोगे? Sir, 5GR. RR will get cancel तो 5mg बचेगा, है ना? 5mg और यहाँ पे क्या था? एक mg बचा ना. cos of 0 1 था. 5mg और एक mg मिला के क्या बनता है? 5mg plus mg 6mg. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स. Yes, sir. Clear. So students, the tension at the lowest point whenever a particle is performing vertical circular motion, students, the tension at the lowest point is maximum and that is equal to 6 mg. हमेशा ये ध्यान में रखना. Lowest position पर tension is maximum 6 mg. Tension at the diameter is 3 mg. The diameter is 3 mg and tension at the highest point is equal to 0. अभी तुम्हें याद आता है derivation? एक derivation मैंने बोला था V is equal to RG. उस टाइम पे मैंने टेंशन को क्या लिया था? 0 लिया था स्टूडेंट्स. टू गेट दिस फॉर्मूला फॉर V तो वैसे V सब्ट्रैक्ट कर दिया तो टेंशन 0 मिल गया मुझे. So students, do keep in mind, where is tension minimum? Highest position. Where is tension maximum? Lowest position, 6 mg. And diametrically opposite position, 3 mg. Is this clear to all of you all? Yes, sir. All the students are in the group. Are they clear? Yes, sir. Yes, sir. It's only those students. Now see the strength. The strength has reached to 28. 4 students are left. But still, Preet doesn't reply, Akrish doesn't reply, Umer doesn't reply, Dhruv doesn't, Rishi doesn't, Mihir doesn't, Avneet doesn't, Aya doesn't, Carol doesn't. Dia is still finding out the answer. I'm trying, she said it, but she didn't unmute it herself. Harshada doesn't, Jyoti, both the Jyotis from TP Bhatia. The Jyoti, below tum TP Bhatia mein, along with your parents very soon. Who's this Kaushik? Kaushik has entered right now, what? Kaushik, from which branch you are, Kaushik?
Kaushik, can you unmute yourself? Kaushik, if you don't reply, I'll throw you out of the lectures. Reply, Kaushik. Which branch are you? Prisha doesn't reply. Neetu doesn't reply. Prapti and Prisha at times. Richa doesn't. Sheena doesn't. Sujit doesn't. Yash doesn't. It seems that these people do not exist at all. और देखो कौशिक रिप्लाई करो कौशिक. Sir, from Thana. अच्छा ये फ्रॉम थाने ब्रांच. तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने अभी टेक्स्ट मैसेज किया तभी तुम रिप्लाई कर रहे हो. तुम अभी लेट एंट्री मार रहे हो क्या? लेट एंटर हुआ लेक्चर्स में? नहीं सर, फिर स्टार्टिंग से हो. लेकिन मैंने तो नाम अभी देखा तुम्हारा और ये नाम कौशिक. मैंने आई कुड साउंडेड डिफरेंट और तेरा रोल नंबर भी नहीं है. नहीं सर, वो रोल नंबर लगाना भूल गया मैं. अच्छा अच्छा समझ में आ रहा है कौशिक? यस हाँ सर. ओके फाइन. स्टूडेंट्स कैन आई इरेज इट? कौशिक इरेज कर दो अभी. यस सर. ओके कैन आई इरेज स्टूडेंट्स रेस्ट ऑफ यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Friends, अभी हमें टेंशन का फॉर्मूला मिल गया. Now my last concept over here for vertical circular motion, students. Friends, can you prove that the total mechanical energy of the system is conserved or remains constant? Because students, throughout मैंने क्या किया, डायग्राम वही रखा, आजू बाजू का मटेरियल सब निकाल के, है ना? Yes. अगर तुम इसको तुम रिजॉल्व के हिसाब से बता सकते हो. ये थीटा हो जाएगा तो ये mg cos थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा mg sin थीटा. Okay, now students, I wanted to prove law of conservation of mechanical energy. Law of conservation of mechanical energy, that is total mechanical energy for vertical non-uniform circular motion is conserved or it is constant. कैसे prove करोगे students? I wanted to prove this. Anyone? Sir, what you have written on the left side? To prove. Like total mechanical energy. Total mechanical energy for a particle performing vertical non-uniform circular motion. Vertical Yes. non-uniform circular motion remains constant. मुझे ये prove करना है. How do you go about with this? Anyone? This is the last part, student. Okay. इसके बाद में सिर्फ तुम्हारे एक दो छोटे से derivation होंगे students. और next lecture will be picking up your problems onto this. Okay. Sir, आपने वो जो फॉर्मूला दिया था पहले, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसको VL स्क्वायर उसमें पुट कर देंगे. Yes, absolutely correct. यानी तुम्हें तो सी अगर सपोज ये छोड़ दो, चलो वर्टिकल मोशन का छोड़ दो, तुम्हें ये मालूम है स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने 10th में या 9th में पढ़ा होगा फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. वापस काइनेमैटिक्स में भी तुमने पढ़ा है. अगर बॉडी को मैंने पॉइंट ए से रिलीज किया, पॉइंट सी पे आता है और मैंने कोई पॉइंट बी दिया था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे हमने निकाला था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे, और सारे में मुझे आंसर mgh मिला था और वो कांस्टेंट मिला था फ्रीली फॉलिंग Yes, बॉडी, sir. है ना? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? तुम्हें काइनेटिक और पोटेंशियल लिखना. तो वैसे अगर किसी ने ये पूछा ना स्टूडेंट्स, तुम क्या करवा लो, तो ये सारे पॉइंट पोजीशन को सिलेक्ट करो ना. सबके कहाँ पे तुम्हें वेलोसिटीज पता है? सर मुझे लोवेस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी पता है, मुझे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन पे पता है, मुझे हाईएस्ट पोजीशन पे पता है ना?
स्टूडेंट्स सारे केस में तुम क्या करो, फाइंड आउट करो काइनेटिक एनर्जी, फाइंड आउट करो पोटेंशियल एनर्जी और दोनों का टोटल निकालो। यहाँ पे भी काइनेटिक निकालो, यहाँ पे भी पोटेंशियल निकालो, यहाँ पे भी टोटल निकालो, यहाँ पे भी काइनेटिक निकालो, यहाँ पे भी पोटेंशियल निकालो, यहाँ पे भी टोटल निकालो, और सारे केस में स्टूडेंट तुम्हें टोटल सेम ही आएगा, कांस्टेंट आएगा, एंड द आंसर शुड बी 5/2 mgr. दिस आंसर इज इन जूल। ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए, और मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? अगर मैंने पूछा काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट पोजीशन चाहिए तो उसके लिए तुम्हें वेलोसिटी मालूम है? हाँ सर मालूम है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी द लोएस्ट पोजीशन क्या है? √5gr, तो यूज कर सकते हो तुम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर? यहाँ पे तो जीरो होगा क्योंकि ये ग्राउंड लेवल ही है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या तुम्हें वेलोसिटी पता है? द डायमीटर, यस, √3gr। फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv²। क्या तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पता है? mgh। और यहाँ पे हाइट क्या है? हाइट इज इक्वल टू रेडियस। What is the velocity at the highest position? √gr. Kinetic energy का फॉर्मूला क्या यूज करोगे यहाँ पे? हाफ mv², velocity at the highest position. What is the potential energy at the highest point? mgh. What is the height from the ground level for the highest position? Twice radius. अभी पता चला how to go about, students? हाँ students? Yes, sir. Students, now I wanted to solve it. Okay, any one of you all can give me the answer for the highest position, students. Total mechanical energy for the highest position. Come on fast, anyone of you all. Any one of you all. I've given you hints, students. I've enough hints दे दिया students. But final answer तो मैंने दे दिया है. अब तक तो आना चाहिए. In spite of saying so many things, students, still there are 4 students who are out. और बाकी सारे भी कुछ स्टूडेंट्स बैठे वो जबरदस्ती बैठे कि बाई चांस कभी पेरेंट्स मीटिंग हो गया और इसने हमें पकड़ लिया तो हमारे पास रीजन तो होगा, नहीं मामा सर झूठ बोल रहे, हम तो बैठे थे, लेकिन फिजिकली प्रेजेंट है. Again, I'm repeating, out of 31, hardly 4 or 5 are mentally and physically present. The rest 25 to 26 students are mentally absent. उनका शायद सेलफोन के अंदर दूसरा चैटिंग भी चल रहा है अदर देन लेक्चर्स के साथ में. और पेरेंट्स पूछेंगे तो बोले कि नहीं मामा मैं लेक्चर्स के हिसाब से चैट कर रहा हूँ. Misuse of online sessions. Yes, anybody can tell me इसके बारे में? हाईएस्ट पोजीशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? Half mv². And what is the velocity at the highest position? तो ये √r(g) the whole square हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? हाफ mgr. हाँ, so r into g, ये काइनेटिक एनर्जी होगा. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mg. mgh. Can I add both of them? So I'm getting 2 mgr. कैसे 2 mgr? Half plus 2 mgr. 2 Yes. and a half. 2 and a half is 5/2. You will get this answer only. स्टूडेंट देखो ना, ये mgr और ये mgr आधा और 2 कितना होता है? 2.5 होता है ना. Sir, you तो added it, right? ये सारे एडिशन ही होगा ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल का एडिशन ही होगा ना. ये टोटल एनर्जी होगा. टोटल चाहिए मुझे. तो स्टूडेंट्स 50% 2 रुपीज इज 2.50 रुपीज. 2.50 रुपीज को 5/2 लिख सकते हो ना. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर मैं लोएस्ट पोजीशन पे चला जाऊं तो क्या आंसर होगा? लोएस्ट पोजीशन पे चला जाऊं तो यहाँ पे क्या होगा? सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एंड व्हाट इज द वेलोसिटी? स्क्वायर करो. पोटेंशियल तो जीरो ही है स्टूडेंट्स लोएस्ट पोजीशन पे क्योंकि ये तो ग्राउंड है. व्हाट इज द टोटल एनर्जी?
ऐड करो। अरे सर यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा है, ये भी चूल में, ये भी चूल में, देखो दोनों सेम आ गया। एग्रीड? Yes, sir. व्हाट अबाउट डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट्स? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m, व्हाट इज द 3 वेलोसिटी? GR, सो 3gr होगा। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर? mgr, mgr ऐड करो। 5/2 mgr. हाँ, you have 5/2 mgr. So from here, can you come to conclusion that the total mechanical energy for a particle performing vertical non-uniform circular motion all the time remains constant? Students, कहाँ पे भी, हाँ, अगर मैं पॉइंट P पे भी अगर लूँ ना, तो वहां पे भी मैं टोटल एनर्जी मुझे हमेशा 5/2 mgr चाहिए। स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, अगर उन्होंने काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिया है और पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P दिया है, पूछा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, समझ में आ रहा है, या हाइट एट पॉइंट P, तो देखो स्टूडेंट तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सर पॉइंट P पे तुम्हें काइनेटिक एनर्जी दिया है, तुम्हें हाइट पूछा है, तो सर कैन आई से टोटल एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पॉइंट P प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। सर टोटल एनर्जी तो सारे पॉइंट्स पे सेम है, कहीं पे भी जाओ, कहाँ पे भी जाओ, कहाँ पे भी जाओ, तो ये तो मेरा आंसर 5/2 mgr होगा ही होगा। काइनेटिक एनर्जी सर आपने दिया है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mg, कैन आई गेट हाइट? समझ में आ रहा है? पोजीशन मिल सकता है, ये देखो ना, ये पता है h, बाकी का सब यहाँ पे ले लो, you'll get the value of h। स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. okay, fine. So students, this is what the concept related to verticals. So students, today we did the part of it was we actually picked up the previous part and gave a slight brief explanation of the previous part also. Okay, of different velocities also. Students, we went for it. Okay, then we went for vertical circular motion. Okay, and in this we have derived so many informations regarding it. लेकिन अगर पूरे चैप्टर में तुम देखोगे ना स्टूडेंट्स, अप टिल नाउ हमें वेलोसिटी के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है और सारे जगह पे mv²/r का यूज यूटिलाइजेशन ज्यादा किया है। समझ में आ रहा है? तो जैसे तुम mv²/r का यूटिलाइजेशन ज्यादा करते हो ना स्टूडेंट्स, तो mr ओमेगा स्क्वायर भूल जाते हो, m इंटू v इंटू ओमेगा भूल जाते हो। यानी ये दो और फॉर्मूलाज है सेंट्रीपिटल के, लेकिन वो तुम्हें डिसाइड करना है कहाँ पे mr ओमेगा स्क्वायर यूज करना है, कहाँ पे mv²/r यूज करना है। समझ में आ रहा है? And by proper vector notations, acceleration centripetal is negative omega square into r, directed always towards the center, and it's in the direction opposite to the position vector. That's why negative sign. And finally, the total mechanical energy all the time remains constant for vertical circular motion. Now, only the small part of it which is there, and this is related to your gravitation. Apart from gravitation, लेकिन तुम्हारे models के अंदर दिया हुआ students. I'll just pick up those two and we'll start with numericals, but that I'll pick it up in the next lectures. Is Yes, this clear? sir. Yes, sir. The next lecture students kindly revise the formulas. अच्छी तरह से revise करना. Okay, जब ये exercise करेंगे तो तुम अपने आप से answer दे सकोगे, वैसा करना students. Okay? Yes, sir. चलो bye, take care. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Most welcome. Bye.